अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान के एक और नए व्लॉग के साथ दिस इज़ के। रात के इस वक्त 12:45 हो रहे हैं, फ्राइडे नाइट मार्च 29, और आज रेन फोरकास्ट है, बल्कि स्टार्ट भी हो गई है अभी लाइट रेन, और बल्कि 2 बजे बता रहे हैं कि हैवी इंटेंस रेन है। तो देखिए आज कितनी कामयाबी होती है, कितनी कवरेज कर पाते हैं हम लोग। तो निकले हैं अभी इंशाल्लाह। आज रेन की वजह से लाइन ही नहीं है। अभी बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे, लाइट रेन है अभी, लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी लोग आए हुए हैं। लास्ट वीक से बहुत कम है रश, आई थिंक आधे से भी कम है लास्ट वीक से। लास्ट वीक 10,000 के करीब लोग थे। आज तो हम बस आ गए, रश तो कम है। 10,000 के करीब हो गया आज के साथ। हाँ। लेकिन ये कि बहुत मॉडरेट क्राउड है आज, बहुत अच्छा क्राउड है। मॉडरेट क्या बात, रेन इतनी है कि आप भीग जाएं, तो लोगों ने अम्ब्रेला दिया है अपना। और इतनी रौनक हो रही है क्योंकि माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमें कोशिश करना पड़ा, लाइन में वेट नहीं करना पड़ा, बहुत इमीडिएटली हमारी एंट्री हो गई है यहाँ पे। अभी बस लाइट रेन स्टार्ट हो गई है, 2 बजे शो कर रहा है कि काफ़ी इंटेंस रेन है। तो कोशिश करेंगे कि अभी 1 घंटे में जल्दी जल्दी हम कवरेज करें। और अच्छा वेदर अच्छा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो शुक्र है हम लोगों ने अम्ब्रेला रख ली थी, तो अम्ब्रेला हमारे साथ है। और जाते हैं अंदर, देखते हैं आज नया क्या है। वैसे आज रश जो है वो काफ़ी कम हो गया है लास्ट वीक से, और बल्कि आधे से भी कम है रेन की वजह से। मुझे नहीं लग रहा बाहर बहुत रश है। एटलीस्ट लाइन पे खड़ा होना नहीं पड़ा, फौरन ही हम लोग अंदर आ गए ना। हाँ, लेकिन लोग बहुत है क्योंकि हम लोग की एंट्री नहीं हुआ, बाहर बहुत लोग हैं। Mashallah, I'm so happy that you are donating 100% of this. Mashallah, God bless you. लोगों का जज्बा देखें आप कि रेन में भी निकले हुए जैसे हम भी, कि बच्चों को सुला के। और लेकिन एक अच्छी फीलिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है। बस थोड़ी कम हो जाए रेन तो अच्छा है, और ज़्यादा तेज़ ना हो। रेन से काफ़ी सारे प्रोग्राम ख़राब हो जाते हैं क्योंकि एक तो रात का प्रोग्राम है, वैसे भी ठंडे चल रहा है माहौल। तो रेन की वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आज शायद हमारी डॉग्स भी शॉर्ट होगी क्योंकि अभी है काफ़ी रेन है। लेकिन रेन का फ़ायदा ये हुआ कि हमें लाइन में लगना ही नहीं पड़ा, बस डायरेक्ट आज अंदर आ गए। टिकट पहले से हमने 2 दिन पहले लिया था। सबने कहा था कि इस दफ़ा जो है और ज़्यादा रश होगा, तो हमने एडवांस में ही टिकट ले लिए थे फर्स्ट टाइम।
तो खैर अच्छा हुआ ही हमारे लिए। 4 चांद लग गई है आज के माहौल में टिकट की वजह से। चलो अब आपको दिखाते हैं आज के वेंडर्स। Assalamu alaikum. My name is Mustafa Bibi. We're here at Shifa Honey. What we like to provide is local raw honey. It's all 100% raw from the bees. Now you might ask yourself the question, why do we have so many different kinds of honey? Where's the original honey? There is no such thing as original honey. If you give me an original flower, I'll give you an original honey. But we like to get the honeys in different flowers just the way the bees make them. It makes it very interesting as a honey experience, makes it more enjoyable for you in order that you can enjoy honey on a daily basis. That's what we like to provide. We also have Palestinian olive oil in support of the Palestinian farmers. And all of our profits from each sale go back to Palestine to support those in need. Thank you so much. Yeah, thank you. I appreciate it. Salam Gallery. 18 karat gold plated waterproof jewelry. You guys can see it's raining right here. Yeah. And we got beautiful jewelry. Everything is stainless steel waterproof. Mashallah. Check us out at Salam, www.salam.gallery. Thank you. Thank you. So this is the website and the address, the name of this brand. Hit this brand, it's very good. They have all the gold plated stainless steel. Handmade pastries. We're out of Riverside. We welcome you. What? We have all types of pastries, milk cakes, baklava cheesecake. We're home of the honeycomb as well. Mashallah. What's the name of the brand? The business is Palm Pastries. Palm Pastry. This is the cookie cream cup. Cookie cream? Yes. Thank enjoy. you so much. Cookie Thank butter. you. Thank you. May Allah bless you. Modest Man Grooming. We sell beard grooming products for all men. We have beard oil, beard balm, helps keep your beard and face hydrated and nourished, prevents itchiness and dryness. Okay. This is a Sahoor candle. It's all natural soy wax candles with Pakistani inspired scents. Oh, mashallah. Gajre ka Haar, which is jasmine and honeysuckle. Really? Phool Mandi, which is like a flower market of rose and carnation and lilies. Chai Ki Chahat, which is a really Oh, mashallah. cinnamon cardamom chai smell. We also have a food scented candle and a Hansa Ki Hawa, which is crystal clear mountain air candles. So these are all Zabardast. candles inspired by our home country of Pakistan. Very nice, mashallah. We are actually from Pakistan too. जी, so हमने जब ये देखा सुकून कैंडल्स, so we wanted to make a shoot. So we're Doodh Patti. We cook our chai in organic milk with a couple of spices for about an hour to really get the flavors seep through. It's really delicious. It's really rich. Come check us out. ज़रूर ज़रूर. Thank you so much. रेन की वजह से हम लोग सही से कवरेज नहीं कर पा रहे, लेकिन पूरी कोशिश की है हमने कि आपको दिखाएं कि रेन में कैसे सहरी फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट हो रहा है अरवाइन में। हमें अमेरिका में 10 ईयर से ज़्यादा हो गए और हम फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतनी रात को अमेरिका में निकले हैं और रेन के अंदर, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे रेन बहुत पसंद है, तो अच्छा है, अब एंजॉय देखते कर हैं रहे कल हैं। तबीयत कैसी रहती है हम लोगों की। घर जाके सबसे पहले तो वो जोशानदा पीऊँगा गरम गरम, और फिलहाल अभी इसके कसीडिया और टैकोस की लाइन में खड़े हुए हैं, और जो लंबी लाइन है अभी भी रात के 2:30 बज रहे हैं, तो बस खा के बस अब निकलने की तैयारी है। रात के अब 3:30 बज रहे हैं। रेन की वजह से जो इवेंट 3 बजे ही रैप अप होना शुरू हो गया था। कुछ लोग थे वहाँ पे, लेकिन बस अभी कसीडिया में हमें 1 आवर की वेट लाइन थी और हमें गरम गरम कसीडिया मिल गया। मैं तो अभी घर जाके ही खाऊँगा रेन की वजह से। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा शेयर करें। जी थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा आज का इवेंट रहा। स्टे ट्यून्ड विद अस।